उन लोगों ने एनआईसीयू में बच्चा रखा क्यों, और रखा तो उसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया? हमको बताया भी नहीं कि ये इतनी छोटी बच्ची का ये आरोग्य स्क्रीनिंग नाम का कुछ चीज होता है जो जो जरूर कराना होता है। Baby Adrita and baby Mivan, still so young, are already wearing large glasses that overshadow their tiny faces. Despite their efforts, they cannot see the world clearly like other children their age. Their parents allege that medical negligence during delivery at Sharanya Multispeciality Hospital in Bardhaman in West Bengal has resulted in vision-related disabilities for these precious babies. Mivan's father Hitesh Chaudhary reveals this heartbreaking story. 23 जून की रात थी वो। मेरी वाइफ को मैंने सारोनिया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया था अराउंड 1:30 बजे रात को। तो उसके बाद सुबह उसका डॉक्टर उसको देखा, शी वाज फिट एंड फाइन। उसके बाद उसने बोला कि मुझे डिस्चार्ज करके ले चलिए यहाँ से। तो डिस्चार्ज के लिए मैंने जब वहाँ पे काउंटर में बोला तो वो बोले अभी नहीं, 12 बजे के बाद करेंगे। फिर 12 बजे मुझे बोला गया कि 5 बजे के बाद करेंगे। 5 बजे जब हमसे मीटिंग आवर कंप्लीट हुआ तब शी वाज फिट एंड फाइन। उसको 7:30 बजे के लगभग उसके स्लाइन में एक इंजेक्शन पुश किया गया। उसके बाद उसको एक लेबर पेन स्टार्ट हुआ और मेरा वाइफ का डिलीवरी उसी हॉस्पिटल में उसी टाइम 8:07 में हो गया। 8:07 में मेरा जब बच्चा वहाँ पे जन्म हुआ तो 45 मिनट तक वहाँ पे कोई भी डॉक्टर ने उसको अटेंड नहीं किया। मेरे बच्चे को एनआईसीयू के अंदर एडमिट किया गया 45 मिनट्स के बाद। 8:47 में मेरा बच्चे को एनआईसीयू में ले जाया गया। उस टाइम तक एक हाई रिस्क बेबी था वो। 8:07 से लेके 8:47 तक उसके पास कोई डॉक्टर नहीं था। उस 40 मिनट के अंदर भी मेरे बच्चे के साथ कुछ भी घट सकता था। फिर उन्होंने मेरे बच्चे को एडमिट किया, मुझे एनआईसीयू के सारे चार्जेस के बारे में बताया और मुझे बोला गया कि आपको 10 दिन तक यहीं पर अपने बच्चे को रखना पड़ेगा। तो मैंने उन लोगों ने जैसा जैसा बोला मैंने वैसे वैसे उनके हाँ में हाँ किया। 10 दिन के बाद उन्होंने कहा कि मुझे और 5 दिन रखना पड़ेगा। ऐसे कर करके उन्होंने मेरे को 43 डेज तक वहां पे स्टे करवाया। Hitesh and his wife did not know that their nightmare would not end with the 43 days spent in the hospital. In fact, it was only just beginning. During their stay, they met another couple, Manoj and Mitali, the parents of baby Adrita, who was also born in the same hospital. Manoj, sensing the turmoil ahead, warned Hitesh to be cautious. Manoj told Hitesh that medical negligence in the same hospital rendered his baby with vision disabilities. ड्यूरिंग दिस टाइम मेरी वहाँ पे मनोज कुमार घोष बोल के एक आदमी से बातचीत हुई। उनका भी बच्चे का ही इशू था। तो उन्होंने मुझे, उनका डिस्चार्ज हो चुका था, उन्होंने मुझे बोला कि 22 जुलाई को मेरे पास फोन आया था, आप अपने डॉक्टर को बोलिए मेरे बच्चे के साथ तो आरोपी का ट्रीटमेंट नहीं हुआ लेकिन आपके केस में नेग्लिजेंस ना करें। तो मैंने अपने डॉक्टर को आरोपी के बारे में बोला 23 जुलाई को कि सर मनोज कुमार घोष का बच्चे का दिक्कत आया आरोपी का। तो वो बोला डोंट लिसन टू हिम, उसका बच्चा बचेगा या नहीं उसका भी कोई गारंटी नहीं है, तुम अपने बच्चे पे ध्यान दो, तुम्हारा बच्चे का ऐसा कुछ नहीं है। तो जब डॉक्टर ने मुझे ऐसी बात कही तो मैं, डॉक्टर से बड़ा तो कोई होगा नहीं, मैं ये बात सोच के चुप कर गया। Hitesh's baby Mivan and Manoj's baby Adrita were both premature babies, making ROP screening critically important for their health. ROP or retinopathy of prematurity is an important screening that must be conducted within 4 weeks of delivery for any infant weighing less than 1.5 kg or born before 32 weeks of gestation. This screening can detect a potentially serious eye condition that can lead to vision impairment and blindness in children. For Mivan, the ROP screening was supposed to be completed within 4 weeks of birth. However, not only did the hospital fail to conduct the ROP screening in a timely manner, but Hitesh alleges that upon discharge after 43 days, the hospital instructed the family to wait for another 15 days before scheduling the ROP screening. जब मेरा बच्चे का डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज के टाइम पे मुझे बोला गया कि आप अपने बच्चे का आरोपी 15 दिन के बाद करवाइएगा, आफ्टर 15 डेज ऑफ द डिस्चार्ज। 5 अगस्त को मेरे पास मनोज जी का वापस फोन आता है कि आप इस चीज को इतना लाइटली मत लीजिए, आप आरोपी का टेस्ट करवाइए, डॉक्टर क्या बोलता है उसको मत सुनिए।
तो इनकी इतनी ज्यादा बात सुनने के बाद मैं इमिडिएटली हमारे यहाँ के जो लोकल सरकारी हॉस्पिटल है वहां पे मैं गया मेरे बच्चे का आरोपी टेस्ट करवाने। तो वहां पे टेस्ट करवाने के बाद मुझे पता चला कि मेरा बच्चे का एग्रेसिव आरोपी है, उसको जो इतने दिन के अंदर ट्रीटमेंट नहीं मिला इस कारण। तो डॉक्टर ने इमीडिएटली उसे एडमिट करने को कहा, हमने इमीडिएटली उसको एडमिट किया। ये आपने कहाँ पे किया, ये जो आपने एडमिट किया अपने बेबी ये को? बर्धवान मेडिकल हॉस्पिटल, ये सरकारी हॉस्पिटल है। इवन उस डॉक्टर ने भी कहा कि जो बच्चा एनआईसीयू के अंदर रहता है उसका तो आरोपी वहीं पे देखना चाहिए और वहीं पे इसको ट्रीटमेंट करना चाहिए था। तो उन लोगों ने एनआईसीयू में बच्चा रखा क्यों, और रखा तो उसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया। हाँ, मैंने उनसे पूछा तो वो बोल रहे हैं मैंने अपने डायरेक्टर को बहुत बार बोला है आरोपी हमारे हॉस्पिटल में नहीं हो रहा, आरोपी शुड बी डन बट ही इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन। एंड बाद में उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो एक पीडियाट्रिक डॉक्टर हूँ, मैंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म की है, लेकिन अगर हॉस्पिटल वाले की तरफ से ये नेग्लिजेंस रहेगा तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, सारोनिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। डॉक्टर का कहना है कि हॉस्पिटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इवन उसका ये ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। Hitesh and Karishma's lives came crashing down when they learned that their baby Mivan could not see from his left eye and the condition of his right eye was deteriorating rapidly. इमिडिएटली मैंने मनोज कुमार घोष से बात की और मैं शंकर नेत्रालय चेन्नई पहुंच गया आगे के ट्रीटमेंट के लिए। वहां पे मेरे बच्चे के साथ काफी बार लेजर ट्रीटमेंट किया गया। लेजर ट्रीटमेंट से भी जब सब कुछ हुआ नहीं, फिर उसको इंजेक्शन दिया गया। इंजेक्शन के बाद वापस उसकी लेफ्ट आई की सर्जरी हुई जो कि नाकामयाब रही। आरोपी ना होने के कारण मेरा बच्चा एक लाइफ रिस्क सर्जरी के थ्रू से गुजरा है आंखों की। उसकी एक आंख ऑलरेडी थोड़ी छोटी हो चुकी है, लेफ्ट आंख में टोटल डिटैचमेंट है और राइट आंख में -10 पावर है जो कि मतलब बहुत ही ज्यादा है। लेफ्ट आंख में कोई विजन नहीं है, राइट आंख में विजन है, उसमें भी स्पेक्स लगाने पड़ते हैं -10। और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसीड्योर है, मुझे हर साल 2 बार चेन्नई जाना पड़ता है अपना सारा काम धंधा छोड़ के, बच्चे को लेके वाइफ को लेके मुझे चेन्नई हर साल जाना पड़ रहा है 2 बार करके। लास्ट 1 ईयर से मेरा बिजनेस पूरा खत्म कर दिया गया है, मैं पूरा बिजनेस से पूरा डिस्टर्ब हो चुका हूँ। मेरा बिजनेस मैं कर ही नहीं पाया हूँ प्रैक्टिकली बताऊं तो। और दूसरी बात है फैमिली के अंदर सब कोई अभी सिर्फ बच्चे को लेके टेंशन में है कि बच्चा कैसे भी करके बच्चे का जिंदगी का क्या होने वाला है और क्या वो करेगा और क्या वो कर पाएगा। ये सब कुछ एक क्वेश्चन मार्क में घेर दिया गया। Baby Mivan's vision-related disability is something he will have to carry with him for a lifetime. Since his birth, Hitesh and Karishma have been tirelessly knocking on various doors to hold Sharanya Multispeciality Hospital accountable for their alleged negligence. Their fight for justice is shaping up to be a long drawn-out battle. A report from the Chief Medical Officer of Health for the West Bengal government clearly states that baby Mivan's suffering occurred because the ROP screening was not conducted by the hospital. The report reads, "It is obvious from the BHT of the patient that ROP screening was not done during the baby's 43 days stay at Sharanya Multispeciality Hospital. As per standard practices, ROP screening should be done within 4 weeks of delivery in any child of birth weight of less than 1,500 grams or gestation age of less than 32 weeks. Accordingly, the baby should have undergone ROP screening during his stay at the hospital." We also spoke with Manoj Kumar Ghosh, baby Adrita's father, and uncovered a similar pattern of negligence in their case as well. मैंने एडमिट कराया था 24 मई 2023 को सुबह 4 से 4:30 बजे तक। हाँ, वो जब देखे मेरे वाइफ का हालत, तब वो डॉक्टर ने कोई भी टेस्ट नहीं किया था और बस देख के ही मतलब बता दिया था कि उसको जब अभी जो है उसका सीजर करना होगा और सीजर करने के बाद जो बच्चा होगा जो जिसको एनआईसीयू में रखना होगा। देखिए, हमारा तो मतलब मानसिक जो है हालत बहुत ही खराब था। तो डॉक्टर साहब ने जब कुछ भी चीज मांगा या कुछ भी चीज हमको करने के लिए बोला तो हम वो सब कुछ किया। मतलब हम ये डॉक्टर साहब को मतलब समझाया कि हमें हमारा बच्चा जो है वो वापस सही हालत में जिंदा चाहिए बस।
तो जिसलिए हमने पूरी खुद को वो डॉक्टर के पास सरेंडर कर दिया। और डॉक्टर ने जो है जो भी हम हमें बताया, हमने वो सब कुछ किया। Both families told the probe that they had completely surrendered to the hospital and the doctors, trusting them and believing that they would do their best for their babies, unaware that they were about to confront a lifelong nightmare. Manoj Kumar's baby Adrita spent about 48 days in the NICU, where she faced the same alarming pattern of negligence. Manoj alleges that, like Hitesh, he was instructed to wait for 15 days after discharge before performing the ROP screening. He describes the harrowing experience of watching his 2-month-old baby endure multiple surgeries. The physical and emotional toll it took on the young child is unimaginable. देखिए, मेरा बच्ची जो है वो 48 डेज तक NICU में रही। तो वहाँ पे तो ROP स्क्रीनिंग नहीं हुआ था। डिस्चार्ज होने का भी 15 दिन बाद ROP करने के लिए बोला। फिर वहाँ से मतलब डिस्चार्ज होने के बाद जब हमने उसका ROP स्क्रीनिंग कराया, तो 22 जुलाई को हमने वो टेस्ट किया था वो बच्ची का। तो वहाँ पे वो निकला कि वो मेरी बच्ची जो है जिसका ROP प्रॉब्लम है। तो 22 जुलाई के बाद हम तुरंत गए कोलकाता संकन नेत्रालय में। 25 जुलाई को उसका दोनों आंख में लेजर ऑपरेशन और एक आंख में इंजेक्शन दिलाया। फिर 28 जुलाई को दोबारा दोनों आंख में फिर से लेजर ट्रीटमेंट हुआ और दूसरी आंख में जिसका इंजेक्शन हुआ। तो हम वो बच्ची के लेके 9 अगस्त को चेन्नई के संकट नेत्रालय में गए। 18 अगस्त को जिसका लेफ्ट आई का ऑपरेशन हुआ। और ऑपरेशन होने से पहले वो डॉक्टर ने हमें बहुत समझाया था कि ये ऑपरेशन जो है ये रिस्की है, क्योंकि बच्ची तब 2 महीने का था। 18 अगस्त 2023 में जिसका लेफ्ट आई का ऑपरेशन किया। 16 अक्टूबर को चेकअप के लिए वहाँ पे बुलाया। तो हम गए तो तब बोले कि जिसका लेफ्ट आई में बहुत ज़्यादा पावर आ चुका है, और तब उसका पावर था 5.75 माइनस। तो जब भी वो ऐसा ही है पावर। Like Hitesh and Karishma, Manoj and Mitali also knocked on various doors in their pursuit of justice. The report from the Chief Medical Officer of Health for the Government of West Bengal further substantiates their claims, indicating that baby Adrita also suffered due to the hospital's failure to conduct the necessary screening. The report reads, "It is obvious from the BHT of the patient that ROP screening was not done during the baby's 48-day stay at Sharanya Multispeciality Hospital. As per standard practices, ROP screening should be done within 4 weeks of delivery in any child of birth weight of less than 1,500 grams or gestational age of less than 32 weeks. Accordingly, the baby should have undergone ROP screening during her stay at the hospital." Like Hitesh, Manoj also expresses that if they had been informed about the ROP procedures by the doctors at Sharanya, they could have saved their baby's vision. ये जो बच्ची है उसका वेट था 900 ग्राम जब वो जन्म हुआ था उसका। तो वो नर्सिंग होम जो डॉक्टर थे पीडियाट्रिशियन, उसको तो बोलना चाहिए था कि 3 से 4 वीक के अंदर इसका ROP स्क्रीनिंग कराना है। और अगर उस हॉस्पिटल में ROP स्क्रीनिंग का कोई बंदोबस्त नहीं है तो वो भी बोलना चाहिए था। तो हम दूसरे हॉस्पिटल में हमारे बच्ची को लेके जा सकते थे, या वहाँ पे नज़दीकी बर्धमान मेडिकल कॉलेज था, हम वहाँ भी जिसका वो ROP स्क्रीनिंग करा सकते थे। लेकिन ये हमको बताया भी नहीं कि ये इतनी छोटी बच्ची का ये ROP स्क्रीनिंग नाम का कुछ चीज होता है जो जरूर कराना होता है। We approached Sharanya Multispeciality Hospital seeking answers about the alarming allegations. In our conversation with the hospital's owner, we were plainly informed that ROP screening was not conducted because the hospital did not have the necessary facilities at that time. The baby born at the age of
27 weeks. Just imagine 6.5 months. Another baby born around the age of 28 weeks. Both are below 1 kilo. In the premature baby, it is a routine medical complication of ROP happens. It is a natural thing. It is because of the immaturity of the everything. It's not only the eyes, but a lot of organs takes its time to mature. In both these baby, because they are so bad, one was ventilated for more than 3 weeks. So it took a long time to get out to be a stable condition. And now the ROP screening, it's a specialized screening process which requires some retinal specialists to do the screening. And if the eye opening is not proper, then the eye screening is not possible. And because it's a hospital in a rural area, so the ROP facility was not available that time in this hospital, right? And after that, when the baby was stable, means off the oxygen, then when the baby was discharged, they were advised for the ROP screening. I am not a pediatrician. It is a part of the pediatrician. I am the gynecologist whose part depends. But you're the owner of the hospital, no? It's. I am the owner. I am a doctor. Anything goes wrong, suppose we have a contacts with some of the local ophthalmology specialist hospital where we used to send the baby for the ROP. But these two baby was not in a position for the shifting also. So if anything goes wrong on the transport, then the blame will come to us why the baby was transferred. So basic consideration was given to save the life of the baby, because both the baby we were not sure whether they will survive or not. It's too premature. Below 28 weeks. Can you imagine? Yeah, but then at that time your hospital did not have an ROP I didn't. also, That time, no. That time ROP specialty instruments and the retinal specialist was not there in Bardhaman also. Only Bardhaman main college. In your hospital also it was not there? The doctor was not. But a level 3 NICU should be having an ROP. Because no, in private there is no retinal specialist available. I am telling you, this is a hospital in the rural belt. Okay. The hospital's website clearly states that the Neonatal Intensive Care Unit, NICU, at Sharanya Multispeciality Hospital delivers care to premature babies and other critically ill babies. The question is, how did the hospital operate an NICU when they did not have the facilities to conduct ROP screening? The CMOH report also alarmingly speaks about tampering. It states, the original BHT of baby of Karishma Chowdhury appears to be tampered. It appears that an engineered page has been inserted later on to prove that they have counseled the patient party about ROP screening. This report alone is shocking to say the least. But any action against a hospital or erring doctor so far? None. Let's for a moment set aside the fact that the hospital failed to perform ROP screening for the babies within 4 weeks or 28 days. But take a look at this discharge certificate for baby Mivan. Why did the hospital instruct the family, even after 43 days, to have the ROP screening done after waiting for another 15 days? We posed this question to the hospital's head, Dr. Soumendra Sahasikdar. When you gave the discharge summary, why was it said that you should do ROP again after another 15 days? Actually, I didn't write the discharge. It was a part of the pediatrician who can explain you some details. We are looking at the CMOH report, which clearly mentions that it is because the ROP screening was not done, and that is the reason why the babies have suffered. So there is negligence, no? It was not done because the facility was not available in this hospital. But then, do you take responsibility? Do you admit that there was negligence from the hospital side? No, it is not a negligence, because we have to take care of the baby's survival first, and then the rest of the things. If the baby survives, my doubt is how are you running a hospital without the basic? Listen, one thing. We cannot do as a whole. We cannot do everything to its extent. A lot of things can come. The CMOH report very clearly speaks about some tampering also. Madam, please. I am explaining you whatever it is. If you want to ask something more, it's not the owner or like that. My primary concern or my pediatrician concern, because it was not under me, it is the pediatrician concern who give more concentration so that the baby should survive.
And if someone can survive, a lot of things come into play. Both parents of baby Mivan and baby Adrita have told us that timely screening or even the right advice from the doctors could have saved the vision of their babies. However, when we pressed the hospital's topmost official for answers, he seemed clearly in no mood to engage with us. You never told the family that you did not have the ROP facility. If you would have told the family, no, I'm not arguing with you. I'm just telling you a point. I thought we are having a conversation. Madam. If you're not having the facility, if you would have advised the family, they could have got the screening done from somewhere else. No, at least you should have advised the parents. We cannot tell like that, madam. We cannot tell a patient when it comes. We don't have any ROP, and this mother, this unconscious mother takes from other hospital. You should know every details how the patient should be treated. But Madam, then after discharge, why would you say on paper that do ROP after 15 days? Sorry, madam. I can't talk with you anymore. I'm giving you every details. Okay? Thank you very much. These babies have undergone numerous eye surgeries and laser treatments at an age when they should simply be exploring the world around them. They now face a lifetime of vision-related struggles, while their parents have brought their fight to the Consumer Court and the State Medical Council to hold Sharanya Multispeciality Hospital accountable. As the family seeks justice, they must also endure exhausting hospital journeys with their children for continued treatment. The suffering these parents, and more importantly, these innocent babies are experiencing for no fault of their own is beyond words. Justice alone isn't enough in this case. What these families desperately need is swift justice.